क्या हो गया, बहुत कम स्ट्रेंथ है, ओनली 21 गाइस। सर वो 2 मीटिंग स्टार्ट कर रखी है किसी ने, तो कुछ लोग उसमें और कुछ इसमें। अच्छा, ऐसे कैसे? तो दूसरी मीटिंग क्या है, उसी पे है क्या? लेट मी जस्ट सी इज देयर एनी अदर शेड्यूल आल्सो। नहीं सर, ऑफिशियल इनवाइट तो यही वाला था, वो शायद जो नए बैच वाले हैं उन्होंने ज्वाइन कर रखी है। नहीं तो वो लिंक किसने क्रिएट किया है? द लिंक हैज बीन क्रिएटेड बाय समबडी, लेट मी सी। सर आज 2 लिंक आए थे सर। फंक्शन ASM, देन दिस इज ESCRP। मेरे पास तो एक ही है यार, I have only one link. I have only one link, I don't know. Let me just tell Sajan or somebody to. Can you also log into that? Is it possible for any one of you to log into that? Because I don't have that link. जिसके पास दो, does any one of you have 2 links? Can you log in and tell people to leave that and come here, please? यस सर, मैं बोल देता हूँ। यस यहाँ से साइन आउट करके उनको बोल दो आने का। सर किसी लिंक पे भी कर दो सर, यही लिंक आएगा सर। अगर 2 लिंक पे अगर करेंगे ना तो इधर ही आएंगे। पर आ नहीं रहे ना बेटा, यहाँ तो सिर्फ अब नाउ आई कैन सी 23 नंबर गोइंग अप नाउ। अर्लियर इट वाज ओनली आने दो, क्योंकि अननेसेसरली पीपल विल मिस आउट, फायदा नहीं है ना फिर बाद में। दिल 26 हो गए, नाउ दे आर कमिंग इन, आई थिंक पीपल आर ज्वाइनिंग इन नाउ, दिल ज्वाइन नाउ। हाँ अब आ गए, अच्छा 28 आ गए, ठीक है शाबाश। हाय रोहित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। 29 30 वेरी गुड। अब आ गए, अब और 2 4 5 और आ जाएंगे, देन वी कैन स्टार्ट। Okay, while people are coming in, we already have 30 of you in the class now. While people are coming in, those of you who are already there, बेटा अगर आपके मन में कोई ये 4-5 क्वेश्चन जो किए थे उनका कोई डाउट हो, आई हैव सेंट यू द फुल एक्सरसाइज आल्सो दिस मॉर्निंग। एक ही डॉक्यूमेंट बना के मैंने भेज दिया सबको विद आंसर्स एट द एंड, सो दैट इफ यू डोंट हैव द बुक इट्स शुड नॉट बी अ कंस्ट्रेंट, यू नो। Let me just drop a message on the group for people to come in here, अगर कोई है तो। राहुल बेटा तू म्यूट कर लेगा, शायद तुम्हारा ही बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा बच्चे, प्लीज म्यूट कर लो।
तब तक बेटा कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. We can discuss if there are any doubts until the time people are coming in. 31 now. Good morning, sir. We are all into the works. Etiquette, sir. Oh, yes. So let's just say that 32. अरे मेरा वो कैलकुलेटर कहाँ है यहाँ से? बेटा आप म्यूट कर लो, आपकी बैक वो आवाज आ रही है बेटा. पर्सनल टॉक्स भी सारी आ जाएंगी. मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तुम्हारी पोल खुल जाएगी. आई थिंक नाउ 31 क्या हो गया, 32 से फिर 31 हो गए. Who's logged out? Okay, I think we shall start now. If people are taking time, I think I don't know whether they're coming in also or not. Chalo, let's look at the next question. Yesterday we had done up to question number 4, guys. Now we look at question number 5. There is nothing much in question number 5. I'll only give you the lead and then give you time to complete it in the class itself. In question number 4, we had draft, and against draft, we were given the water plane areas in question number 4, which we completed yesterday. In question number 5, the difference lies that instead of water plane area, what you're given is the TPC. Okay, and then let me put down these values. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And then the TPC values are given 22.6, 22.2. I'm sure all of you would have received the exercise, even if you don't have the book. It has the answers at the end. Everything has been put together at one place. So you should be just focusing on this document and closing out your stuff. Okay. So he says, find the displacement and KB both in seawater at 6 meters draft. That's question number 5, guys. Obviously, यार, TPC को integrate करके तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है. If I keep putting TPCs together, TPC is tons per centimeter. That means the amount of weight required to cause an immersion or rise of 1 centimeter. So how much weight is required to increase the draft by 1 centimeter or decrease the draft by 1 centimeter? That weight at that particular draft is the TPC of the vessel. Correct, beta? Am I right? TPC pata hai na? Yes, sir. Yes. Sir, Yes. Okay, what is the formula for TPC? Would you like to recall? water plane area into density divided by 100. Okay, water plane area upon 100 into the density of the water in which she is floating. Guys, correct? So in this formula, density of the water is known as seawater in this case. TPC is given, 100 is a constant. So obviously from TPC we can get the water plane areas, yes or no? Yes, sir. Correct. So against the draft, the TPC can be used to convert into water plane areas. So obviously, if you rewrite this formula, water plane area becomes TPC into 100 upon density of whatever water it is. In this case, it is 1.025.
So I cannot see the board, sir. बेटा बोर्ड तो दिखाई देना चाहिए. Is this problem faced by others also, or is he the only one facing No it? sir, no sir. Fit to frame करो, fit to frame. नहीं, आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा? Can some of you see, yes or no? Because I want to figure out. Yes, yes sir. Okay, तो बेटा एक काम करो, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आप साइन आउट करके ना लॉग इन दोबारा कर लो फटाफट, और लॉग इन करने के बाद मुझे बता देना वंस यू आर बैक इन द क्लास. फटाफट साइन आउट करके साइन इन करो. Okay, sir. Now I can see. Okay, beta, ठीक है. So I wrote this TPC formula, which I'm sure you must be aware of, correct, beta? Water plane area upon 100 into density, right? And then we can rewrite, use the TPC to get water plane area if TPC is known and the density of the water is known, correct, beta? Okay. Now, so that means if I multiply this 22.6 by 100 and divide that by 1.025, I'll get the water plane area. And then this question becomes similar to what was done in question number 4. Yes, you can convert that, but what will happen is when you'll multiply, you'll get some digits and decimals. It may become cumbersome. So it is only for convenience, a short, convenient way. If you want to get water plane areas and put them down here, there is nothing technically wrong in it. But a better way could be that you say water plane area is equal to TPC into a constant. Why? Because every time you'll be multiplying the TPC by this constant where K is equal to 100 upon 1.025 in this case. अगर density कुछ और होगी तो value density की यहाँ आ जाएगी. Correct बेटा? Yes, sir. है ना? And इस K की value हम end में लगा देंगे एक बार में, instead of wasting time in getting the water plane areas here for all. If I use K, then this water plane area becomes 22.6 K. This becomes 22.2 K. This becomes 21.6 K. 20.9 K, 19.7 K, 17.8 K, and 14.6 K. Now I get these water plane areas using the constant K, and K is 100 upon the density of the water. Correct, beta? So this will simplify my working. This K is introduced only for simplified working. It has no other reason. It's only to keep the thing simple. We have introduced this constant. Correct, beta? Right? Now you can make the diagram. So TPC का concept हमारा revisit हो गया है. TPC की definition हमने कर ली है. TPC का formula हमने revise कर लिया है. So that is what the basic has been revisited today. And now we can make, yesterday you told me you're comfortable with the side elevation. So I'll make the side elevation diagram. Had you wanted me to make the cross section, I could have made that. So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This water plane area is 22.6 K, not 22.6. 22.6 is TPC. 22.6 when multiplied by K, where K is 100 upon 1.025, it becomes the water plane area. This is 22.2 K, 21.6 K, 20.9 K, 19.7 K. 1 minute, मेरी गलती है. It's my mistake, beta. I have written it in the reverse order. It's my, sorry, please disregard this. What is written on the diagram? 0 is here. So this is 14.6 K, my mistake. 14.6 K, 17.8 K, 19.7 K, 20.9 K, 21.6 K, 22.2 K, and 22.6 K. Is the diagram correct now, beta? Yes, sir. Now please shade the area. What do you need to calculate for displacement? You need to calculate the volume. What do you need to get for KB? You need to calculate the moments.
So please shade the area, or shade the volume rather, which is to be calculated if you need displacement at 6 meters draft. I'm sure you'll agree this is the volume required to be calculated. Yes or no? So shade that so that you don't make any mistake. हल्की सी shading मार दी अभी. Now this volume is bound by how many ordinates? Please count the number of ordinates, guys. How many ordinates? 7. Which Seven. rule can be applied with 7 ordinates? Rule 1. Both Only 1 and only 2. 1 and 2, sir. you can apply rule 1 or you can apply rule 2. Choice rests with you. Question does not say anything. So whichever rule you use, your answer shall be deemed to be correct. Obviously, both the answers will not be same. Both the answers will not be same. Answers would be different, but you can calculate with whichever rule you want. So which one would you like? I don't know पीछे answer 1 से दिया है या 2 से दिया है. We can use anyone in the class and we can match our answers with each other. So which rule would you like to use, 1 or 2, beta? 1. You want to use 1? Okay, fine, no mind. So then please make the table. I am not with rule 1. Write down the ordinates, write down the Simpson's multiplier, product of volume. Liver कौन सी एक्सिस के अबाउट चाहिएंगे? Keel. Keel. Liver about keel. Write down the values. That will give you product of moment about keel. Put the values. I'm not doing anything. You'll give me SOP volume and you'll give me SOP moment and you'll get the answers. Moment about keel. You get me displacement and get me KB. पीछे से आंसर मैच करते हैं तो ठीक है. Then that means पीछे वाला जो अब बुक में आंसर है वो भी रूल 1 से है. अगर नहीं मैच करता है तो one possibility is that you may have used a different rule, then we can compare with others in the class. So please close out this question. किसी को डाउट हो, don't keep waiting for people to do it and at the end you say I don't know. If you have any doubts, please come up as people are solving and let me have your doubts resolved. So don't be a mute spectator. Please, if you have any doubts, speak up. I give you 3 minutes to solve this question. So it is 54, 57 तक इस question को खत्म करो बेटा. किसी को भी डाउट हो पूछ लेना बेटा, और अगर हो गया तो that will give you some confidence. एंड में प्लीज रिमेंबर आपके POV में भी K आएगा, SOP वॉल्यूम में भी K आएगा और यहाँ पर आपका इसमें भी K आएगा. एंड में K की वैल्यू ये डालना मत भूलना, 100/1.025. Check, solve and see that you are getting the answer. I am sitting here only on the chair, so you'll not be seeing me in the frame, but I am very much listening to you. बेटा डाउट हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज.
As anybody's, if somebody solves, you please match the answers and tell me if answer matches, then I have no concern. People can solve and match with the book. If it's not matching, then we'll have to match with each other and see. सर मैच हो गए दोनों. दोनों में, that means book में भी answer rule 1 से ही है. Okay, I give another minute or so for others to complete. Please complete, no issues. Okay, anybody still solving? Let me know. Yes, sir. Please do it. Let me know as soon as you're completed, beta. As soon as you complete, let me know.
सर राइट आंसर आ गया। Okay, beta. Anybody who's still solving and wants me to wait? None? Fantastic. Good. सर Okay. देयर इज अ वन डाउट। हाँ बोलो। सर बस इसमें ये नहीं मुझे पता लग रहा कि रूल नंबर 1 का पता चल गया भी कैसे सॉल्व करना है उससे। सर मतलब बोथ रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं ये थोड़ा सा सर। So what is the eligibility for rule 1? Repeat the eligibility as per you for rule 1, beta. What is the eligibility? सर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स शुड बी 3 सर। 3, only 3? सर 3 और मोर सर देन इट once। हाँ, दोनों की एलिजिबिलिटी बताओ जोर से बोल के, तुम्हारा क्वेश्चन अपने आप आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर रूल 1, बेटा? सर फॉर रूल नंबर 1 सर मिनिमम ऑर्डिनेट शुड बी 3। ओके चलो, मिनिमम से तो ज्यादा है। अगर मिनिमम से ज्यादा हो तो क्या क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशन? सर देन इट शुड बी ऑड। ऑड। तो इज 7 ऑड नंबर और यस और नो? यस सर। सो कैन रूल 1 बी अप्लाइड? Yes, sir. Rule 1 can be applied, sir. Okay. Likewise, please see the eligibility for rule 2 and see whether rule 2 can also be applied or not. Yes, sir. सर इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 1/3 × 1 × SOP वॉल्यूम जो आएगा टोटल वही करना पड़ेगा ना सर? आप बताओ बेटा, क्या डाउट क्यों आया आपके मन में? मैं वही करता हूँ सर, मेरा आंसर नहीं है लेकिन। तो कहीं गलती क्या होगा? आपका SOP कितना है, SOP वॉल्यूम कितना है, वो एक बार क्लास में बोल दो, somebody will confirm। 363.4 K। Is that correct guys? ठीक है ठीक है। और K की वैल्यू रख रहे हो ना एंड में? K की वैल्यू भी लगा देना बेटा, 100/1.025। हाँ वही की है सर। तो फिर तो मैच करना चाहिए बेटा। कॉमन इंटरवल इज 1/3 इज द कोएफिशिएंट, SOP वॉल्यूम मिल रहा है और फिर बाद में नहीं, ये तो वॉल्यूम होगी, उसको 1.025 से फिर मल्टीप्लाई करोगे टू गेट डिस्प्लेसमेंट। वो भी किया नहीं किया? आंसर में डिस्प्लेसमेंट दिया है, वॉल्यूम नहीं दी हुई है, वहां पे गलती है तेरा पक्का। ओके सर, ओके ठीक है। सर रूल नंबर 2 की प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम जो लिखा आपने, वो प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम क्यों है? मतलब हमने इसमें जो वाटर प्लेन एरिया लिखा है ना पूरा का पूरा नीचे 14.6 के ऑर्डिनेट्स में। बेटा आप कल क्लास में थे? हाँ सर। इससे पहले क्वेश्चन क्या किया था? इससे पहला क्वेश्चन क्या था? इससे पहला वाला क्वेश्चन वॉल्यूम वाला ही किया था सर। तो उसमें क्या किया था? वाटर प्लेन एरिया को प्रॉब्लम पता क्या हो रही है? मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि इन 4 क्वेश्चंस को घर पे देख लेना। अगर तूने देख लिए होते तो या तो तुझे डाउट नहीं होती, और डाउट होती तो तू क्लास शुरू होने से पहले पूछ लेता। See, this is where it sometimes puts off the other person. He says यार कि मैं काहे को इतनी मारामारी कर रहा हूँ इनका, मैं भी रिचुअल कर लूँ काम कंप्लीट करने का। मतलब you guys don't want to even do a little bit that is being advised to you, and that's an advisory. It's not being shoved down your throat यार। अगर कोई तुम्हें ये कह के जाता है कि 4 क्वेश्चन को देख लेना और कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ लेना, तो you don't even want to look at that damn thing, and want to start afresh in the morning। जैसे नींद खुली जो याद आया, सर कैसे था बताओ जरा। This is no way to learn यार, this is absolutely no way to learn, I'm sorry। If you had no doubt in question number 4, there is no reason for you to have doubt in question number 5। Class, am I right? Yes sir। Suddenly we cannot just keep going back and forth। You cannot keep pushing me every time to the start line and say यहाँ से फिर दोबारा शुरू कर दो सर, क्योंकि मैं कल तो मेरा मन नहीं किया, रात को मैं लेट गया जी, टीवी देखा मैंने, मूवी देखी रात को। ऐसे थोड़ी होता है यार। I have not done 2 questions and told you to do 18। I am saying I am going to do 20 with you, but उनको रिवीजन तो घर पे कर लो यार जित अब नीड बेस्ड। तुम वो भी नहीं करना चाह रहे हो। जैसे नींद खुली, जैसे दिल किया वैसे आके बैठ गए।
That's not fair यार. I'm sorry. हाँ बेटा, ये जो eligibility for rule 2. Sir, eligibility for rule 2, minimum ordinate should be total 4. हाँ जी. और ये Sir, 4 तो and नहीं. then 4 से ऊपर है sir. Sir, and when you have number of ordinates more than 4, then it should be plus on 4, 7, 10, 13. So does it fall in that series? Does Yes, the sir. present? So can rule 2 be applied then? Yes, sir. Yes, sir. Got it now. Sir. So जो मैंने उसको कहा है दूसरे बंदे को, तुझे भी अप्लाई करता है. घर पे थोड़ा पढ़ लिया करो, समझे? Yes, sir. अगर तुम मुझे आज ये क्वेश्चन पूछोगे इसमें रूल 1 क्यों लग रहा है, तो दैट मीन्स पीछे की क्लास तुमने सारी खत्म कर दी है. नहीं सर, रूल 1 का पता था, ये तो रूल 2 जैसे रूल 1 की एलिजिबिलिटी पता था, वैसे रूल 2 का होना था बेटा. Yes, sir. Anyway, okay. Question number 6. Half breadth of tank top. Any tank, it's has a bottom, has a top, the tank top. Half breadth of a tank top at a common interval of 3 meters. This is the question. From forward to aft. So these half breadths are given from forward to aft. 3 is the forwardmost limit पे. 9.6 is at the aftermost of the tank top. He says find the area of the tank top and the geometric center of the tank top from the forward end of the tank, not forward of the end of the ship. I don't know where it is located on the ship. It may be somewhere in between. It may be right at the aft. It may be right at the forward end. But GC from the forward end or forward bulkhead, whatever you want to say, of the tank. Okay. So first, don't worry about how to solve it. Please make a diagram of it. Put the ordinates basis what has been told earlier. I don't want to even give you a hint. And diagram should look somewhat reasonable, not to size, but it should not be totally weird and awkward diagram, you know. और जब आपकी डायग्राम बन जाए तो बोर्ड से कंपेयर कर लेना, और उसके बाद उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लेना. First make the diagram before you discuss how the solution to the question. If you agree with this diagram, let me know. If you have any concern about this diagram, please share. Anybody having any challenges about the diagram, beta? Or is it correct? Yes. Have you doubled up the ordinates? Or Yes, sir. you missed out? Okay, good. If you have not doubled up the ordinates, then you are just taking a chance. कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे. Tomorrow somebody can argue मैं half से भी कर सकता हूँ. I don't want to get into the discussion. What I am suggesting to you is a process which is time tested, simplified, and prevents the possibility of inadvertent error, especially under exam pressures. So बाकी आपको deviate करना तो आपकी मर्जी है. How many ordinates are there, guys? 8. सर टैंकर का टैंक बना दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बेटा, मैंने टैंकर का टैंक टॉप बना दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी नहीं किसी का बनाओ बेटा. अगर ऑर्डिनेट्स ये हैं तो टॉप ऐसा ही बनेगा ना बच्चे. हाँ सर, वही मतलब मैंने वही किया है, बट मैंने ना एक साइड
स्ट्रेट रखिए, एक साइड कर्व दिखाइए, मतलब इस चलो तरीके कोई बात नहीं, दैट्स ऐसा आल्सो कुछ ओके। गलत तो नहीं है इसमें? नहीं कोई गलत नहीं, कोई जरूरी नहीं। हाँ, यू आर राइट, इट कैन बी ऑन द सेंटर, इट कैन बी कंप्लीट वन साइड ऑफ द थिंग, इट कैन बी अ पर विंग टैंक आल्सो। मैं पूछ रहा था, मतलब ऐसे नहीं गलत। नहीं, इट्स ओके, दैट्स फाइन, इट कैन बी अ विंग, इट कैन बी अ साइड टैंक आल्सो ना, टर्मिनेटिंग एट अ इनर बल्कहेड, राइट? ओके, यस सर, वही उसी के ठीक साथ। है, नो प्रॉब्लम्स, दैट्स फाइन, इट्स समथिंग लाइक दिस, यू नो। पर उसमें प्रॉब्लम पता क्या होगी, ये गलत क्यों है? बट इट्स फिर सिमेट्रिकल। हाँ, ये हाफ ब्रेथ नहीं देगा फिर। क्या मतलब सर, हाफ ब्रेथ नहीं देगा? अगर मैंने कहा होता कि ब्रेड्स ऑफ द टैंक टॉप आर 6, 9.3, 12, फिर तुम इसको ऐसे बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेटा। हाँ जी। बट क्वेश्चन में दिया है हाफ ब्रेथ्स। हाँ, हाफ ब्रेथ ऑफ अ टैंक टॉप लिखा है ना सर, मैं तो हाफ ब्रेथ का क्या मतलब हुआ कि जो सेंटर लाइन है टैंक टॉप की, उसके दूसरी तरफ भी सिमेट्रिकल है ना, जब भी तो डबल होगा बेटे। ठीक ठीक है सर, समझ गया। अगर ये ब्रेथ्स दी होती ना, चाहे वो 6, 9.3 ये दे देता, फिर तुम ये डायग्राम बनाओ या ये बनाओ, दोनों ठीक थे, राइट? ठीक है सर, ठीक है। बट इस केस में तुम्हारा डायग्राम गलत है, सॉरी, आई सेड नो डज नॉट मेक अ डिफरेंस, नो, योर डायग्राम इज नॉट एज पर द क्वेश्चन, बिकॉज़ क्वेश्चन हैज गिवन हाफ ब्रेथ्स एंड नॉट फुल ब्रेथ्स, राइट? यस सर। ओके, ठीक है, गुड। ओके, 8 ऑर्डिनेट्स, रूल 1 डज नॉट फिट इन, रूल 2 डज नॉट फिट इन, सो व्हाट डू वी डू? हाँ बेटा। सर ये एरिया किस चीज का पूछ रहा है सर? ये टैंक टॉप बेटा, क्वेश्चन आपके पास है, आपने उसमें खोला है तुमने, जरा खोलो सर। क्वेश्चन खोलो। फाइंड द एरिया एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर फ्रॉम द फॉरवर्ड। हाँ, और क्वेश्चन का शुरू देखो बेटा, ये तो अंग्रेजी की बात है ना बेटा। हाँ, पहला क्वेश्चन का बिगिनिंग पढ़ो। सर समझ गए सर, द हाफ ब्रेथ ऑफ अ टैंक टॉप एट 3 मीटर इंटरवल्स फ्रॉम फॉरवर्ड। करेक्ट, तो किसके ऑर्डिनेट्स हैं? टैंक टॉप के, तो एरिया किसका निकलेगा? टैंक टॉप का। टैंक टॉप एरिया सर वही सर, लेकिन टैंक टॉप तो अलग अलग है ना सर, ये एक ही टैंक टॉप है पूरा। ये पूरा एक ही टैंक टॉप है ना बेटा। अरे मान लो तुम्हारा ये शिप में, मान लो तुम्हारा ये टैंक है, लेट अस से ये कोई भी टैंक है तुम्हारा, ठीक है, ये कोई भी टैंक है, राइट? तो इसकी ये इसकी बॉटम हो जाएगी यहाँ पर, ये इसकी टैंक टॉप होगी, राइट बेटा, ये वाला, करेक्ट? यस सर। तो ये एरिया निकालना है ना टैंक टॉप का। इस पे तुमने ये ब्रेड्थ नाप लिए, ये ब्रेड्थ नापी, ये नापी, ये नापी, ये नापी, ये हमने यहाँ बना दी। ठीक है सर, समझ गए सर। ओके Okay, so rule 1 does not apply, rule 2 does not apply. Does everybody agree that rule 1 or 2 cannot be used to solve it in one go, right? यस सर, बोथ कैन yes अप्लाई। sir. Yeah, so we'll have to suitably use a combination. तो देखो, अगर मैं चाहूं तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ऑर्डिनेट्स के इस एरिया को मैं रूल 1 लगा दूं और इसको मैं रूल 2 लगा दूं, 1, 2, 3, 4। दैट मीन्स I calculate area A1, calculate area A2, एंड जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था एक बल्कहेड का, जिसके नीचे एक अपेंडेज था रेक्टेंगुलर, उसमें क्या था? एरिया A1 was curvilinear bound by curve, area A2 was a regular geometric shape. Doesn't make a difference. In this case, both area A1 and A2 are curvilinear shapes. जैसे यहां पर आपने क्या किया था, याद करो, A1 कैलकुलेट किया था, D1 कैलकुलेट किया था रेफरेंस एक्सिस से, A2 कैलकुलेट किया था, D2 कैलकुलेट किया था रेफरेंस एक्सिस से। याद आ रहा है क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर अपेंडेज वाला बल्कहेड के नीचे? फिर हमने पूरा एरिया कैसे निकाला था? A1 प्लस A2। तो बेसिकली मोटी मोटी बात क्या है, यहां पर आपको A1 A2 D1 D2 निकालने पड़ेंगे, एंड देन इट विल बी रिपीट ऑफ व्हाट यू डिड हियर, राइट बेटा? करेक्ट? यस ओके, द अदर ऑप्शन कुड बी somebody में से, नहीं यार मैं ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर रहा हूं, इसे नहीं, मुझे यहां से लेके 1, 2, 3, 4, 5, मैं यहां से यहां तक रूल 1 यूज करूंगा और यहां पर रूल 2 यूज करूंगा। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि 5 ऑर्डिनेट में रूल 1 लग जाएगा, 4 ऑर्डिनेट में इधर रूल 2 लग जाएगा। सो एनीबडी चूजिंग फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो राइट, anybody choosing this combination is also right. You can choose whichever combination you want. Again, obviously the answers would not be same, so answer matching will be possible only with the person
who has used the same combination as what you have used. Am I clear about what I said, beta, before we solve the question? बच्चों, जो मैंने कहा है वो समझ में आ गया कि आप यस सर, ये अलग A1 कर लो, ये A2 कर लो, या ये A1 कर लो, ये A2 कर लो, मर्जी आपकी है, बट दोनों के आंसर अलग आएंगे और आपका दोनों आंसर ठीक होंगे. सो यू डोंट हैव टू आस्क कौन सा सही है, दोनों सही हैं. ओनली थिंग इज you can match the answer with the person who has used the same combination. In this case, जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसका कॉम्बिनेशन उसने सजेशंस में लिख दिया वहां क्वेश्चन में. It is only a suggestion, not that you should always do that way. You can do the other way also. कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो. बुक में शायद वो कह रहा है use rule 1 for the first 5 ordinates. Correct, beta? Yes, sir. That is a suggestion, because and if we follow that, you'll be able to match your answer. So that is the only reason why I'm following that. Otherwise, it's not binding. So first 5 are what? First 5 is from 6. 1, 2, 3, 4, 5. So that means he wants us to calculate this area A1 by rule 1. Book ki jo suggestion agar le, and then this area which I'm shading in blue as area A2. Do you agree this is the suggestion from the book, right? Yes. तो अगर लेकिन अगर आप ये भी करोगे तो भी ठीक है. So don't get confused. You can take any combination which is correct. So it doesn't make a difference. Now you tell me बेटा, इसको distance of GC कहां से चाहिए क्वेश्चन में? फॉरवर्ड से. फॉरवर्ड मतलब 6 मीटर ऑर्डिनेट से. Yes, sir. So can I draw an axis here and mark it XX? Is it okay with everybody? Yes, sir. So that means distance of the GC is required from XX. Okay. अब मुझे क्या चाहिए basically? In this, I need to calculate A1 and I need to calculate D1 from XX. What is D1 XX? D1 XX is the distance of geometric center of area A1 from XX. Correct, beta? Yes, sir. And I also calculate A2 and D2 XX. Yes or no? Yes, sir. ये दोनों चीज अलग अलग कैलकुलेट करनी आती है, अलग अलग टेबल बनेंगे. ऑब्वियसली एक में रूल 1 लगेगा, एक में रूल 2 बने लगेगा, तो 2 बार टेबल लग के 2 कैलकुलेशन होंगी. जी सर. सो पहले मैं पूछ लूं, डज एनीबडी हैव एनी एप्रीहेंशन कि मैं A1 D1 XX कैसे निकालूंगा? किसी को डाउट है इसके निकालने पे बेटा? नो सर. A2 D2 XX पे मैं टेबल बना देता हूं फिर भी, और आप बोलोगे. लेट मी मेक द टेबल फॉर A1 फर्स्ट ईयर. डायग्राम से बड़ा आसान हो जाता है. डायग्राम से मेरे ऑर्डिनेट्स जो होंगे, अगर एक्स एक्स से मैं ऑर्डिनेट्स लूं तो 6 मीटर्स, 9.3, 12, 14.4 एंड 16.2. अगर मुझे रूल 1 लगाना है यहां पर तो मल्टीप्लायर्स हो जाएंगे. आई डोंट थिंक दैट नीड्स डिस्कशन. 14241, राइट? दिस विल गिव मी प्रोडक्ट ऑफ एरिया A1. If I need the distance of GC from X, what will I do? I'll take livers about XX, correct, beta? Correct, sir. Look at the diagram and tell me what is the liver for 6 meter ordinate from XX? 0H. 0H. 0H, yeah. दूसरा क्या हो जाएगा? 1H. 1H, 2H. Is 2H, 3H, and 4H. And this will give me product of moment of area A1 about XX. Correct, beta? Yes. जी sir. And you will get SOPs and you will get A1 and D1 XX. Correct? You will be able to solve it? Yes, sir. Okay, very good. So, and then same table if I have to make for A2. I'll put the ordinates. A2 starts from here, 16.2. 17.1. Diagram में बड़ा आसान हो जाएगा. 18 and 19.2. ये इसका मल्टीप्लायर 1, इसका 3, इसका 3, इसका 1. रूल 2 अप्लाई कर रहे हैं. 1331 होगा बेटा. यस और नो? 4 मिनिमम 4 ऑर्डिनेट्स के लिए. Yes, sir.
Now you tell me what will be the lever for 16.2 diagram से देखो from XX. 5H. 15H 4H 12 4H. 12 मतलब 12 sorry 12 अरे 4H यार 4H अगर हम यहाँ H में चल रहे हैं तो 4H. 4H. तो ये देखो ना यहाँ 16.2 यहाँ था, उसका 4H था, तो 16.2 का तो 4H रहेगा ना बेटे. फिर 5H, 6H and 7H, right? Yes sir. 7H के बाद अब मैं जाऊंगा डायग्राम में चेक करने के लिए कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी. 0H, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H. That means there is no mistake. And this calculation will give me A2 and D2XX. Yes or no? मिल जाएंगे A1 D1X and A2 D2X. Yes or no? Yes sir. Then what will happen? Total area will be equal to A1 plus A2 and DXX क्या होगा? Who will tell me the formula for DXX? How do I calculate DXX? A1 D1 A1 into D1 XX, then plus A2 into D2 XX divided by A1 plus A2, right guys? Simple principle of moments, correct? And that will give these two would be my answers. बेटा इससे पहले कि तुम ब्लाइंडली सॉल्व करते जाओ ड्रिल की तरह, ये बताओ किसी को समझने में मुश्किल है या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. इफ यू आर नॉट इन एग्रीमेंट ऑन एनी ऑफ द इश्यूज. इफ हाँ बेटा बोलो. ओके, इफ यू आर ओके देन इट्स 12:23 नाउ. I give you 7 minutes to complete this. 12:30. I would suggest we don't take a break. Then I'll release you at 1 o'clock. Is that okay? Yes sir. ठीक है. Yes, तो sir. 7 मिनट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो and then we'll take up the next question.
बेटा ऐसा करो तुम लोग ना ये करके टेक अ 15 मिनट्स ब्रेक वी रिज्यूम द क्लास एट 12:45 इसको आराम से कर लो आई डोंट वांट पीपल टू रश थ्रू so let's connect at 12:45 complete this question together with a break Yes.